वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल सानी की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और सरमायाकारी की ताउन को बढ़ाने की अहमियत पर जोर। वज़ीर तिजारत शेख फैसल बिन सानी बिन फैसल सानी का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने के लिए कतर के अज़्म का इरादा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की यूएई के नायब वज़ीर-ए-आज़म शेख अब्दुल्ला बिन ज़ैद अल नाहियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दो तरफ़ा कसीरुल जहती उमूर और इलाक़ाई और आलमी पेशरफ़्त पर तबादले ख्याल। करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। आज़ाद कश्मीर का 78वां यौम तासीस आज मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 24 अक्टूबर 1947 को कश्मीरी मुजाहिदीन ने डोगरा साम्राज्य के खिलाफ जिद्दोजहद करते हुए रियासत का 5000 मुरब्बा मील इलाका आज़ाद करवाया। गाजी मिल्लत सरदार मोहम्मद इब्राहिम खान की क़यादत में आज़ाद कश्मीर की पहली इनकलाबी हुकूमत की बुनियाद रखी। भारत जुल्म सितम के तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद कश्मीरियों के जज्बे हुर्रियत को नहीं दबा सका। अफवाज पाकिस्तान ने मार्का हक में भारत को तमाम शोबों में शिकस्त फार्स से दो चार किया। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक का मुज़फ़्फ़राबाद में यौम तासीस की मरकज़ी तकरीब से खिताब। आज़ाद कश्मीर के 78वें यौम तासीस के मौके पर मुज़फ़्फ़राबाद में 21 तोपों की सलामी दी गई। यौम तासीस के मौके की मुनासिबत से सुबह का आगाज दुआया तकरीबात से हुआ। पाकिस्तान और कश्मीर की सलामती और शहदाए कश्मीर के बुलंदी दर्जात के लिए खुसूसी दुआ। 21 तोपों की सलामी के बाद पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। अक़वाम मुत्तहिदा का 80वां यौम तासीस तजदीद अहद का दिन। दूसरी जंग अज़ीम की हौलनाकियों के बाद नस्ल इंसानी को जंग की तबाहकारियों से बचाने और आलमी अमन के क़याम के लिए 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा की बुनियाद रखी गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने अमन, तरक्की और इंसानी हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ में अहम किरदार अदा किया। ताहम फ़लस्तीन और कश्मीर समेत कई तनाज़ात आलमी इदारे की कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। पाकिस्तान ने 29 ममालिक में अक़वाम मुत्तहिदा के 48 मिशंस में फ़राइज़ अंजाम दिए। अक़वाम मुत्तहिदा का 80वां यौम तासीस दूसरी आलमी जंग के बाद वजूद में आने वाली अक़वाम मुत्तहिदा का मकसद इंसानियत को जंग की लानत से बचाना, तनाज़ात की रोकथाम अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन से दरीना रिश्ता। 1947 से आलमी अमन का सरगर्म अलम बरदार। 48 अमन मिशन, 31 ममालिक, 2,37,000 पाकिस्तानी सिपाही, अमन की खिदमत में फ़ख्र का सफ़र। वतन के 182 बहादुर जवानों ने आलमी अमन की खातिर जानों का नजराना पेश किया। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी कुर्बानियों को सराहा। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के उसूलों पर मबनी है। पाकिस्तान का अज़्म और ताउन 1960 से अक़वाम मुत्तहिदा में फ़ाल किरदार से नजर आता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर और फ़लस्तीन में अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। कश्मीरी अवाम का हक़ खुद इरादियत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के बावजूद सल्ब किया जा रहा है। गज़ा इज्तिमाई इंसानी अक़दार का कब्रिस्तान बन चुका है। पाकिस्तान बतौर गैर मुस्तक़िल रुकन सलामती काउंसिल अमन, इंसाफ और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार का अक़वाम मुत्तहिदा के दिन पर पैगाम। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मिस्र का दौरा, निहायत गर्मजोशी से इस्तकबाल। मिस्र की मुसल्लह अफ़वाज के चाको चौबंद दस्ते की फील्ड मार्शल को सलामी। काहिरा में मिस्र के वज़ीर दिफा और दिफाई पैदावार जनरल अब्दुल मजीद साकार और मिस्र की मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अहमद खलीफा फ़ती से अलहदा मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दो तरफा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जामे ज़ाहर के सरबरा शेख मोहम्मद अल तैयब से भी मुलाकात। नामालूम फौजी की यादगार और मरहूम सदर मोहम्मद अनवर सादात की कब्र पर फूल रखे। इसराइल ने मगरबी किनारे को जम करने की कोशिश की तो वो अमेरिका की तमाम हिमायत खो देगा। डोनाल्ड ट्रंप का इसराइल को इंतबाह। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने मगरबी किनारे के इंतज़ाम से मुतालिक इसराइली पार्लियामेंट का इक़दाम गजा मुआहदे के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। गजा में जंगबंदी के बावजूद इसराइली दहशतगर्दी थम न सकी। गजा में शहदा की तादाद 68,234 हो गई। 1,70,373 फ़लस्तीनी ज़ख्मी। पाकिस्तान की इसराइली जारियत पर दो टोक मजम्मत। मकबूजा मगरबी किनारे पर नाम नेहाद खुद मुख्तारी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इलाकाई और आलमी शराकतदारों के साथ मिलकर फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ बिलखुसूस उनके हक़ खुद इरादियत का हुसूल यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का आलमी बिरादरी से फौरी और मौसर कार्रवाई का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। गजा में इसराइली जारहियत की मजम्मत। दो रियासती हल पर जोर। अमन, इंसाफ और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की अपील। अमन इस्तेहकाम के लिए आलमी बिरादरी से अमली इक़दाम का मुतालबा। शर्म अल शेख अमन मुआहिदा नई उम्मीद की किरण है, मगर इसराइली हमले मुआहिदे की रूह के मनाफी है। फ़लस्तीनी अवाम के तारीखी हक़ हुकूक खुद इरादियत का एहतराम नागुज़ीर है। पाकिस्तान का मुतालबा है कि मुकम्मल फायरबंदी, इसराइली इनखला और इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी यकीनी बनाई जाए। कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदून का सलामती काउंसिल में खिताब। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद इसराइल गजा में इमदादी सामान की तरसील में रुकावटें पैदा कर रहा है। मुआहदे को 2 हफ्ते गुजर गए, लेकिन इसराइली रुकावटों के बायस गजा में अब भी भूख और प्यास बरकरार है। इसराइल कहत ज़दा गजा में इमदादी सामान की तरसील को दानिस्ता रोक रहा है। गजा में इमदादी सामान की तरसील फौरी बहाल की जाए। आलमी इदारा सेहत समेत 41 तंजीमों का मुतालबा। सदर ट्रंप और शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात 30 अक्टूबर को होगी। ट्रंप अगले हफ्ते एशिया के दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से भी मुलाकात करेंगे। सदर ट्रंप आज रात मलेशिया के लिए रवाना होंगे। वो जापान और जनूबी कोरिया भी जाएंगे। एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन इजलास के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस कैरोलाइन ल्यूट की तस्दीक। अमरीकी पाबंदियों से रूस की मईशत असरअंदाज नहीं होगी। किसी बैरूनी दबाव को कबूल नहीं करेंगे। तसादुम नहीं चाहते। मुतनाज़ अमूर बातचीत से हल करना तरजीह है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। सदर ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात खारिज इम्कान नहीं। मुलाकात बामकसद और नतीजा खेज होनी चाहिए। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन हैविट। यूरोपीय यूनियन का यूक्रेन की माली जरूरियात पूरी करने का ऐलान। अगले 2 बरस तक यूक्रेन के लिए इमदाद जारी रहेगी। माली जरूरियात की तफसीलात और तरीक़ाकार पर हतमी फैसला दिसंबर में होगा। यूक्रेन को दिफाई जरूरियात के लिए वसाइल फराहम किए जाएंगे। सदर यूरोपीय काउंसिल एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय यूनियन की जानिब से माली मदद के ऐलान पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का खैर मकदम। भारत में इम्तियाजी शहरियत के कवानीन, इबादत गाहों पर हमले और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात बैनुल-अक़वामी अमन के लिए खतरा है। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के बगैर अमन, इंसाफ और जामे तरक्की के अहदाफ हासिल नहीं किए जा सकते। अक़वाम मुत्तहिदा अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना कलीदी किरदार अदा करे। बैनुल-अक़वामी सतह पर इस्लामोफोबिया, अदम बर्दाश्त और दाएं बाजू की इंतहा पसंदी के बढ़ते हुए रुझान पर गहरी तशवीश है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की नुमाइंदा काउंसलर साइमा सलीम का खिताब। मोदी की सिफारती नाकामी और खामोशी भारत की आलमी रुसवाई का सबब। मफाद परस्त मोदी मुल्की खुदमुख्तारी को दाव पर लगाकर अपने इक़्तिदार को तूल देने में मसरूफ़। नाकाम सिफारती पॉलिसी ने भारत को अमेरिका समेत दीगर आलमी ताकतों के मफादात की भेंट चढ़ा दिया। मोदी का विश्व गुरु, दुनिया का उस्ताद का दावा आलमी सतह पर ट्रंप के सामने झुककर ज़मीं बोस हो गया। कांग्रेस की मोदी पर सिफारती नाकामियों को लेकर सख्त तनकीद। मोदी कौमी पॉलिसी छुपाते जबकि ट्रंप इसका ऐलान करते हैं। ट्रंप ने ही हुकूमत के सरकारी ऐलान से पहले ही ऑपरेशन सिंदूर रोकने का ऐलान भी किया था। जय राम रमेश।
ह्यूमन राइट्स वॉच ने अफगान तालिबान की आमराना पॉलिसियों का पर्दा चाक कर दिया। आजादी इजहार का गला घोंटा जा रहा है। तालिबान हुकूमत में सहाफियों पर तशद्दुद, गिरफ्तारी और जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला तेज। खवातीन की आवाज, मौसीकी और ड्रामा मुकम्मल तौर पर ममनू। अफगान मीडिया पर बदतरीन सेंसरशिप मुसल्लत। सहाफत खौफ और जबर के साए में जिंदा। इम्तियाजी पाबंदियां अफगानिस्तान को खामोश कर रही हैं। तालिबान सहाफत पर कदगन और इंसानी हुकूक की पामाली बंद करें। अक़वाम मुत्तहिदा में एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुतालबा। वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की तुर्की, सऊदी अरब, श्रीलंका और ECO हुकाम से अलहदा मुलाकातें। लॉजिस्टिक पार्टनरशिप, बंदरगाहों की तामीर और ट्रांसपोर्ट के जदीद मनसूबों पर तफसीली तबादला ख्याल। पाक तुर्की इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और NLC को शराकतदारी में शामिल करने पर इत्तेफाक। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और बाहमी दौरों के तसलसल पर जोर। श्रीलंका की ट्रांसपोर्ट, जदीदकारी और बुद्धमत वर्से के फ़रोग़ में पाकिस्तान के ताउन की पेशकश। ECO के साथ इलाके राबतों, ट्रांजिट सहूलतों और इस्तांबुल, तेहरान, इस्लामाबाद राहदारी के इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। 22वीं हेल्थ एशिया नुमाइश का शानदार इफ्तिताह। पाकिस्तान के लिए सेहत के शोबे में आलमी ताउन और जदीद पेशरफ्त का नया बाब। कराची एक्सपो सेंटर में जारी हेल्थ एशिया नुमाइश में दुनिया भर के वफूद की शिरकत। मुल्की और गैर मुल्की मंदूबीन, सीनियर हुकूमती अहदेदारान, सेहत के माहिरीन और सनतकार शरीक हुए। इफ्तिताही इवेंट में वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की रूसी कारोबारी वफ़द और मॉस्को एक्सपोर्ट सेंटर के CEO से मुलाकात। पाकिस्तान और रूस के दरमियान मेडिकल टेक्नोलॉजी और सेहत के शोबे में तिजारती ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। ऐसी नुमाइश पाकिस्तान की सेहत के शोबे में जिद्दत और आलमी ताल्लुकात को फ़रोग़ देती हैं। वज़ीर सेहत जियो साइंस एडवांस रिसर्च लेबॉर्ट्री की आलमी मयार के मुताबिक अपग्रेडेशन। मादनी तहकीक में नया संग मील। SIFC का मादनियात और कानकनी के फ़रोग़ में कलीदी किरदार। मईशत के इस्तेहकाम की नई राहें। जदीद तरीन तहकीकाती सहूलियात से मकामी और बैनुल अक़वामी कंपनियाँ मुस्तफ़ीद होंगी। स्कैनिंग, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, XRD और रिमोट सेंसिंग से तहकीक में इनकलाबी पेशरफ्त। जियो साइंस लैब में जदीद तज्ज़ियाती सॉफ्टवेयर और 1 लाख से ज़ायद मादनी डेटा सेट दस्तियाब। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज। जनूबी अफ्रीका का T20 स्क्वाड पाकिस्तान पहुंच गया। सीरीज का आगाज 28 अक्टूबर को रावलपिंडी में पहले T20 मैच से होगा। दूसरा मैच 31 अक्टूबर, तीसरा मैच 1 नवंबर को क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में शेड्यूल। और ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का 25वां मैच। आज पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमें कोलंबो में मद्दे मुकाबिल होंगी। मैच दिन 2:30 बजे से PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। ऑस्ट्रिया में जारी वर्ल्ड टूर ATP 500 सीरीज। इटली के यानिक सिनर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव, इटली के मैथ्यू ब्रिटनी भी लास्ट 8 में शामिल। रूस के डैनियल मेदवेदेव को अपसेट शिकस्त का सामना रहा। स्विट्जरलैंड में स्विस इंडोर्स बेसल टेनिस टूर्नामेंट। टॉप सीड अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज को प्री क्वार्टर फाइनल में शिकस्त। फ्रांस के ओगो हेम्बर्ट, नॉर्वे के कैस्पर रूड क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। स्पेन के यौमी मुनार और कनाडा के फेलिक्स अलियासीन भी लास्ट 8 में शामिल। सऊदी प्रोफेशनल फुटबॉल लीग में अल अहली ने अल नजमा को हरा दिया। अल अहली ने अल नजमा को 1-0 गोल से हराकर तीसरी फतह हासिल की। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल फ्रासल ब्रेकन ने 34वें मिनट में किया। इस कामयाबी के बाद अल अहली की टीम लीग टेबल पर चौथे नंबर पर आ गई है। जकार्ता में आर्टिस्टिक जिमनास्टिक वर्ल्ड चैंपियनशिप। रूस की एंजेलिना मेलेनकोवा ने खवातीन का ऑलराउंडर खिताब अपने नाम कर लिया। मेलेनकोवा ने अमेरिका की लियान वोंग को मामूली फर्क से शिकस्त दी। चीन की योंग चिंगयिंग ने कांसी का तमगा हासिल किया। साइकिलिंग ग्रैंड रेस टूर डी फ्रांस 2026 के रूट का ऐलान। टूर डी फ्रांस का इख्तितामी मरहला एक बार फिर
मनारमट्रे की पहाड़ी पर होगा। इख्तिताम से पहले साइकिलिस्ट को स्की रिजॉर्ट अल्पडोजियर में 2 मुश्किल सेशंस देना होंगी। रेस का आगाज 4 जुलाई को बार्सिलोना में होगा, जबकि 26 जुलाई को होगा। और रूस और बेलारूस के एथलीट्स पर पैरालंपिक विंटर गेम्स में शिरकत पर पाबंदी। दोनों मुल्कों के एथलीट्स गैर जानिबदार हैसियत से भी हिस्सा नहीं ले सकेंगे। खिलाड़ियों पर पाबंदियां 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद आयद की गई थीं। पैरालंपिक विंटर गेम्स आइंदा साल 6 से 15 मार्च तक इटली में मुनक्किद होंगे। Honorable Prime Minister of Pakistan, Excellencies, Honorable Ministers, distinguished delegates, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. We begin the closing ceremony with a recitation from the Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Excellencies, ladies and gentlemen, as we come to the close of the Regional Transport Ministers' Conference 2025, it is indeed a moment of reflection, gratitude, and optimism. Over the past 2 days, we have witnessed remarkable exchanges of ideas, collaborative commitments, and forward-looking strategies aimed at enhancing regional connectivity and sustainable transport cooperation. Excellencies, ladies and gentlemen, to share reflections on the outcomes and future course of our collective journey, I would like to invite the Honorable Federal Minister for Communications, Government of Pakistan, Mr. Abdul Aleem Khan, to deliver his concluding remarks. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The Honorable Prime Minister of Pakistan, Mian Mohammad Shehbaz Sharif, Honorable Ministers, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. As we draw this landmark Regional Transport Ministers Conference 2025 to a close, allow me to express my deep appreciation to all the participating ministers, deputy ministers, senior officials, and representatives from our partner organizations, including the IRU, ECO, ADB, ISTB, and the United Nations, for your valuable contributions and active engagement over these 2 days.
Your presence in Islamabad has reaffirmed our collective commitment to strengthening regional transport connectivity, not merely as a means of building infrastructure, but as a pathway to shared opportunity, economic integration, and sustainable prosperity of our entire region. Excellencies, under the guidance of the Honorable Prime Minister of Pakistan, Mia Mohammad Shahbaz Sharif, we have reiterated our resolve to pursue a vision of regional cooperation that connects our economies and our people. Pakistan remains steadfast in implementing forward-looking initiatives such as Vision 2025, the 5 E's framework, and our national transport policies and digital trade facilitation platforms, all designed to modernize logistics, streamline cross-border movement, and foster an enabling environment for regional trade. Our discussions over the past 2 days have been both substantive and futuristic. We collectively recognized the urgent need to bridge missing infrastructure, links for seamless regional transit, the importance of innovative financing, and partnerships with international development institutions to realize these capital-intensive projects, the significance of harmonizing regulatory frameworks for road and rail transport, and the transformative potential of digitalization, smart corridors, and paperless custom systems in enhancing efficiency. Excellencies, to further strengthen regional connectivity, participants emphasized the importance of liberal visa facilitation schemes for drivers, crew members, and logistic personnel to ensure smooth and uninterrupted cross-border transport operations. In this regard, the ECO visa sticker scheme was recognized as a valuable initiative that can serve as a model for promoting ease of movement among transport professionals, fostering greater regional integration and operational efficiencies. We also underlined the importance of road safety, the protection of vulnerable users, and the harmonization of safety standards, ensuring that connectivity is not only faster, but safer for all. Ladies and gentlemen, in the maritime sphere, we reaffirmed our shared interest in promoting a blue economy with Gwadar Port envisioned as a future hub of regional trade and prosperity. This conference has demonstrated that our region holds immense potential. When we work together with trust, with vision, and mutual respect, the discussions and recommendations emerging from this forum will serve as a foundation for practical cooperation and policy alignment in the months ahead. Let me assure you that Government of Pakistan stands ready to continue facilitating dialogue, partnerships, joint ventures, joint initiatives that will advance our shared connectivity agenda. In the end, I once again extend heartfelt thanks to all the delegates, development partners, and ministers for their participation, and all those who worked tirelessly to make this conference a success. May our collaboration continue to strengthen the bonds of friendship and progress across our region. Thank you so very much. Pakistan, Zindabad. Thank you, Honorable Minister, for those insightful closing remarks and for your leadership in steering this vital regional initiative. Thank you, Honorable Minister. Excellencies, ladies and gentlemen, it is my distinct honor to invite the chief guest of the closing ceremony, the Honorable Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, Mr. Mohammad Shahbaz Sharif, to address this august gathering. Ladies and gentlemen, the Honorable Prime Minister of Pakistan. Bismillahirrahmanirrahim.
Honorable Minister for Communication, Mr. Aleem Khan, Honorable Ministers from friendly and brotherly countries, Secretary General ECO, Honorable members of delegations from friendly and brotherly countries, Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum and a very good afternoon. On behalf of the government of Pakistan and the people of Pakistan, I would like to extend a very warm welcome to all of you and thank you for taking time from your very precious busy schedule to grace this occasion in Islamabad. Indeed, it's a very significant moment that we have gathered here today to have a very meaningful and productive dialogue at this point in time as to how to further strengthen our bilateral and multilateral relations in various walks of life. Ladies and gentlemen, for centuries, our land, Pakistan, which was carved out of subcontinent back in 1947 through great efforts and sacrifices by the Muslims of the subcontinent under the great leadership of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the founder of Pakistan. We have all heard those glorious stories of Pakistan being a great channel, conduit, through which scores of countries exchange goods, cultural traditions, and creative ideas. From the ancient Silk Route to today's Belt and Road Initiative, our region has always been a conduit and a channel of great opportunities. Today, shifting global geopolitical dynamics and the growing dominance of economic priorities have breathed new life into the ancient corridor, transforming it from a relic of the past into a strategic necessity for our bright future. Excellencies, our geography links the warm waters of the Arabian Sea and the Persian Gulf, traversing the majestic Karakoram and Himalayan range and flowing through the timeless Indus Valley. We are at the confluence of China, the Eurasian land bridge, and the Middle East, a unique tri-junction of economic corridors connecting China, Central Asia, and the broader Middle East. Pakistan's long coastline also makes our ports of Gwadar and in future many other potential ports on this coastline, including Karachi, as key transit points on the maritime Silk Road.
honorable delegates, as I speak in this august assembly of our brotherly and friendly delegates, sharing my thoughts with you on this important topic, I am aptly reminded of the vision and foresight of my leader, Prime Minister Mohammad Nawaz Sharif, who staunchly believed that peace and development are intertwined. One of his earliest initiatives after assuming power back in June 2013 was the signing of the China-Pakistan Economic Corridor, the flagship project of President Xi Jinping's Belt and Road Initiative. Therefore, CPEC has been a transformative experience for this region, connecting markets, bringing people together across China, Central Asia, South Asia, and the Middle East. By linking Gwadar Port with China's Xinjiang province, it has opened new routes for trade and energy cooperation, serving as a vital gateway of connectivity, opportunity, and of course, cultural exchanges. Ladies and gentlemen, I take huge pleasure and honor in informing this distinguished audience that after the success of its first phase, we are now entering into the second and very exciting phase of CPEC 2.0, centered and based on fostering business-to-business partnerships, strengthening investment opportunities for Chinese companies in Pakistan as well as from friendly and brotherly countries sitting on this round table, so that we can promote our mutual targets in peace and prosperity. Ladies and gentlemen, we are also working on a number of rail connectivity projects like the Trans-Afghan Railways and the Islamabad-Tehran-Istanbul connectivity. And I have already discussed this project with my very dear brother, President Tayyip Erdogan, and my very dear brother, President Masoud Pezeshkian of Turkey and Iran, respectively. And this opportunity is a great opportunity to revolutionize cross-border trade and connectivity. Also, ladies and gentlemen, enhanced air links to Central Asian countries, along with frameworks such as the TIR Convention and international road transport mechanisms, would really bring a great quantum jump in our trade, our joint venture investments, projects, and of course, people-to-people contacts, which will go a long way in bringing our countries together like never before. Ladies and gentlemen, I am confident that these mega projects would synergize the economic strengths of regional countries and usher in a new era of enhanced trade, economic cooperation, and energy collaboration in the region and, of course, beyond. Excellencies, in today's digital age, connectivity is not just limited to roads
railways and air links. It is all about data, innovation, research and development, and technological integration. Pakistan is investing in digital infrastructure to ensure that we are adequately equipped to catch up with the fourth industrial revolution around the globe. And having a huge youth bulge in Pakistan, our demographic situation is a challenge as well as an opportunity in Chinese parlance. 60% of our population spans between 15 years to 30 years. So it's a huge challenge and also brings a huge opportunity. If we are able to provide ample opportunities to our youthful boys and girls in the field of IT, AI, vocational training, that will be our greatest asset. We don't have black gold, but we have our youth as our greatest asset, which will become the harbinger of Pakistan's speedy progress and prosperity in time to come. Ladies and gentlemen, it cannot be stressed enough that cooperation in the trade and economic spheres is a win-win proposition, offering rich dividends to all. This would strengthen our common stake in peace and reinforce efforts for development in the region. In conclusion, let me mention in all humility, but with fullest certainty at my command, that together we would sow the seed of cooperation so that we may harvest the fruits of development and prosperity for our people and the region beyond. May Allah Almighty give us the guidance and strength to work together very closely and move in unison in future to make this region and regions beyond our borders, which will carry the program of prosperity and progress for all time to come. Thank you very much. God bless us. Thank you, Honorable Prime Minister, for your inspiring words and for your continued support in promoting regional cooperation and connectivity across our shared transport corridors. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, as we conclude now, there is going to be a group picture to commemorate this successful conference. May I request all ministers and heads of delegations and development partners to please join the Honorable Prime Minister and the Honorable Minister of Communications for a group picture. All the ministers, heads of delegations and heads of development partners, please join the Honorable Prime Minister of Pakistan, Mr. Muhammad Shahbaz Sharif, and Honorable Minister of Communications, Mr. Abdul Aleem Khan, for a group picture. रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी सेशन वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब किया और उन्होंने कहा कि हुकूमत और अवाम की तरफ से शरीक मंदुबिन को खुशामदीद कहता हूँ। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस से बातचीत का अहम मौका फराहम किया। कॉन्फ्रेंस दो तरफा और इलाकाई रवाबित के फ़रोग के लिए भी अहम है।
वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि कॉन्फ्रेंस दो तरफ़ा और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए अहम है। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट एंड रोड मनसूबे तक रवाबित का महवर रहा है। बढ़ती मुआशी अहमियत ने कदीम गुज़रगाह की अहमियत में मज़ीद इजाफा कर दिया है। गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची बंदरगाह मैरीटाइम सिल्क रोड में शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज़ है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि ट्रांस अफ़गान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। यकीन है कि बड़े मनसूबे खित्ते की इक़्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। तिजारत, मईशत और तवानाई के शोबों में ताउन से नए दौर का आगाज होगा। आज के डिजिटल दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फ़ज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं। आज का दौर डेटा और तकनीकी इंजमाम से वाबस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है। नौजवान नस्ल को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत की फ्राहमी तरजीह है। तिजारत और मईशत में ताउन सबके मफाद में है। खुशहाली और तरक्की से अमन के मुश्तरका मफादात को तक़वियत मिलेगी। हमें आने वाली नस्लों के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने का अज़्म करना है। वज़ीर-ए-आज़म का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में इख्तितामी नशिस्त से खिताब। उन्होंने हुकूमत और अवाम की तरफ से शरीक मंदबीन को खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस ने बातचीत का अहम मौका फराहम किया है। नाज़रीन, रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी सेशन इस्लामाबाद में जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए और उन्होंने इख्तितामी सेशन से खिताब भी किया। खिताब के दौरान उन्होंने तमाम तर उमूर पर और उनकी अहमियत पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कॉन्फ्रेंस दो तरफा और इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ के लिए भी अहम है। आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ रोनमा हो रही हैं। हमारा खित्ता मौजूदा बेल्ट एंड रोड मनसूबे तक रवाबित का महवर रहा है। बढ़ती मुआशी अहमियत ने कदीम गुज़रगाह की अहमियत में मज़ीद इजाफा कर दिया है। गवादर की तवील साहिली पट्टी और कराची बंदरगाह मैरीटाइम सिल्क रोड में शामिल हैं। पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी मनसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो मरकूज़ है। ट्रांस अफ़गान रेलवे इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफे से मुआशी और तिजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यकीन है कि बड़े मनसूबे खित्ते की इक़्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। तिजारत, मईशत और तवानाई के शोबों में ताउन से नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि आज के डिजिटल दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फ़ज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं है। आज का दौर डेटा और तकनीकी इंजमाम से वाबस्ता है। पाकिस्तान डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी कर रहा है। नौजवान नस्ल को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक तरबियत की फ्राहमी तरजीह है। तिजारत और मईशत में ताउन सबके मफाद में है। खुशहाली और तरक्की से अमन के मुश्तरका मफादात को तक़वियत मिलेगी। हमें आने वाली नस्लों के खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करना होगा। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस का इख्तितामी सेशन इस्लामाबाद में जारी है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस में तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, अज़रबाईजान, बेलारूस के वज़ीर मवासलात ने शिरकत की है। Mr. Sheikh Rashid Alam, CEO, Brand Foundation, Mr. Farooq Alam Amil, Chairman of IPO Pakistan, Ministry of Commerce, Government of Pakistan, Dr. Talat Shabib, Director, China-Pakistan Study Center, Qamar Muhammad Dilshad, former Secretary, Election Commission of Pakistan, former Caretaker Minister of Law, Dr. Shaista Lodi, founder of the Aesthetic Clinics in Pakistan. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Good morning, distinguished guests, profound business leaders, esteemed members of the diplomatic corps, ladies and gentlemen. It is both a privilege and a profound pleasure to be back amongst you today at the 16th edition of the Brand of the Year Awards. I am particularly touched to recall that this marks the fourth occasion I have had the honor of presiding over this prestigious ceremony. My previous three engagements
During my tenure as the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, allowed me to witness the nascent growth of our brand ecosystem. Today, as the Chairman of the Senate, I return not just as a guest, but as a witness to your remarkable journey of resilience and evolution. This continuity is not a mere coincidence. It is a testament to my unwavering belief in your cause. I have seen this platform grow, and more importantly, I have seen the brand business community it represents become an indispensable pillar of the national economy. Today, I wish to speak to you about a simple yet powerful idea, the brand power economy. In the traditional sense, an economy is built on agriculture, industry, and services. But in the 21st century, a new potent layer defines its strength, the power of its brands. Why is this so crucial? First, brands command premiums and build trust. A product is what you sell. A brand is why people buy. It is a promise of quality, consistency, and value. When Pakistani brands earn consumer trust, they can compete not just on price, but on value. This builds sustainable profitability, moves our industries up the value chain, and shifts our national identity from being a market of commodities to exporters of premium trusted products. Second, brands are catalysts for exports and soft power. Think of the nations we admire economically. We do not just think of their GDP. We think of their iconic brands, their automobiles, their technology, their fashion. These brands are their global ambassadors. They create a perception of quality and innovation that opens doors for the entire nation. Every Pakistani brand that succeeds internationally, from sports goods to IT services, from textiles to food products, it is not just earning foreign exchange, it is a rebuilding Pakistan's image on the global stage, piece by the positive piece. Third, the brand economy is an engine for jobs and innovation. A strong brand does not emerge from a vacuum. It is born from research, marketing, design, digital strategy, and sophisticated logistics. It requires creative minds, tech-savvy youth, and skilled professionals. This ecosystem creates high-value jobs for our talented young population. It fosters a culture of innovation where the focus shifts from mere production to design thinking, customer experience, and global markets. The landscape has transformed dramatically. Since I first entered this community, the digital revolution has redrawn a map of commerce. I am inspired by stories like that of the young entrepreneurs from villages like Miachan, we are no longer limited by geography, but are selling to the world on global platform. This is the new face of Pakistani
enterprise, and is a phase we must champion. Ladies and gentlemen, the government's role, as I see, is not to interfere but to enable. It is to set policies that foster a stable, predictable, and supportive environment for you to thrive. It is to build the infrastructure, both physical and digital, that allows your ambitions to take flight. And it is to recognize, as we are doing today, and your success is intrinsically linked to Pakistan's prosperity. When your brands flourish, our industries thrive. When your industries thrive, they create jobs and opportunities. When opportunities abound, our nations prosper. The equation is as simple as it is powerful. To the award winners and nominees here today, I offer my heartiest congratulations. You are not just excellent business people. You are the architects of a new, confident, and economically vibrant Pakistan. You are the living proof that our nation lacks nothing in vision, creativity, or determination. Continue to innovate, continue to build with quality and integrity, continue to tell Pakistan's positive story to the world through the excellence of your products and services. I thank the Prime Foundation for their steadfast commitment to this cause and for once again extending this gracious invitation. My prayers are with you for even greater success. May your brands become household names, and in doing so, may they help build the prosperous Pakistan we all envision. Pakistan Zindabad. चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, मजबूत ब्रांड्स मजबूत मईशत की जमानत हैं। पाकिस्तान के नामवर ब्रांड्स ने आला मयार के लिए अवार्ड हासिल किया। अवार्ड के जरिए सार्फिन का एतमाद और मार्केट में ब्रांड की हैसियत को उजागर करता है। ब्रांड ऑफ द ईयर अवार्ड मुल्क की सनतों और कारोबारी बरादरी की खिदमात का एतराफ़ है। मुल्क की तरक्की के लिए मुआशरे के हर तबके को अपना किरदार अदा करना है। मुल्क की ब्रांड की तामीर की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। और आसिन इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।